हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू CivTech सिंप्लीफाइड। मेरा नाम इंजीनियर इमरान अजीज है और मैं आपको अपने चैनल पे खुशामदीद कहता हूं। हमारा आज का टॉपिक है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट MCQs, जिसमें हम आज प्रेजेंट करेंगे 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और ये पार्ट 7 है हमारी ऑनगोइंग वीडियो सीरीज का। आई होप सो फार आपने काफी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की होगी, जिसमें हमने टोटल 150 क्वेश्चंस आपको प्रेजेंट किए हैं और आज की वीडियो में हम बात करेंगे MCQs फ्रॉम 151 टू 175। ये 25 MCQs हैं जो हमने शॉर्टलिस्ट किए हैं फॉर गेट एग्जाम, PMP एग्जाम या प्रोफेशनल इंजीनियर एग्जाम के लिए। तो हमारे साथ रहिए, वीडियो को एंड तक मुकम्मल देखिए और अपनी रहनुमाई हासिल कीजिए ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। तो बढ़ते हैं स्क्रीन की जाने, जहाँ पे हम एक प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको ये टॉपिक मजीद एक्सप्लेन करेंगे। तो लेट मी शेयर माई स्क्रीन। सो जैसे कि मैंने डिस्कस किया, ये पार्ट 7 है और इसमें हमने 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करने हैं। सिंप्लीफाइड को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। सो क्वेश्चन नंबर 151 इज माइलस्टोन चार्ट इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर डैश। ए बार चार्ट, बी PERT, C CPM, all of these. So A is the correct option. जो माइलस्टोन चार्ट है वो बार चार्ट की इम्प्रूवमेंट है। So A is the correct option. 152, a Gantt chart indicates A, balance of work to be done, B, efficiency of project work, C, comparison of actual process with the scheduled progress, option D, progress cost of project. तो जो Gantt चार्ट है वो कंपैरिजन करता है एक्चुअल प्रोग्रेस विद द शेड्यूल प्रोग्रेस। तो जो एक्चुअल प्रोग्रेस साइट के ऊपर हो रही है उसको आपका जो स्केड्यूल इनिशियली कॉन्ट्रैक्टर ने सबमिट किया था उसके साथ आपने जब चेक करना हो तो वो Gantt चार्ट के जरिए आप उन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। द जॉब गोइंग अहेड ऑफ स्केड्यूल आर कन्वीनियंटली शोन in option A Gantt chart, option B milestone chart, option C pie chart, option D none of these. So A is the correct option. जो जॉब ahead of schedule जा रही होती है उसको Gantt chart के जरिए शो करते हैं। 154, the earliest method used for planning of projects was option A CPM, option B PERT, option C bar chart, option D milestone chart. So सबसे पहले जो मेथड होता था इनिशियल डेज में, अर्लीस्ट मेथड वो बार चार्ट कहलाता है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 155, ट्रेवल चार्ट्स आर यूज्ड टू, ऑप्शन ए एनालाइज मटेरियल हैंडलिंग, ऑप्शन बी डिटरमिन इन्वेंटरी कंट्रोल डिफिकल्टीज, ऑप्शन सी प्लान मटेरियल हैंडलिंग प्रोसेस एंड रोड्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। ट्रेवल चार्ट जो है वो इन तमाम चीजों के लिए यूज होता है। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। एंड ये इन्वेंटरी कंट्रोल की डिफिकल्टीज को जज करना और मटेरियल हैंडलिंग प्रोसेस या प्रोसीजर या उसके अंदर जो रूट है या ट्रांसपोर्ट स्टेशन के ऊपर जो मटेरियल यूज हो रहा है उन तमाम को ट्रेवल चार्ट के अंदर भी एनालाइज किया जाता है। 156, PERT stands for Programmed Estimation and Reporting Technique. Option B, Process Estimation and Review Technique. Option C, Programmed Evaluation and Review Technique. Option D, Planning Estimation and Resulting Technique. So C is the correct option. PERT stands for Programmed Evaluation and Review Technique. 157, actual performance of a task is known as, option A an event, option B an activity, option C a duration, option D none of these. Actual जो performance है किसी task की वो activity से show होती है, उसको activity कहते हैं। 158, the start or completion task is called, option A an event, option B an activity, option C a duration, option D any one of these. So start or completion of task is called an activity. So B is the correct option. 159, an activity requires, option A events, option B resources, option C time and resources, option D energy. So C is the correct option. An activity requires time and resources. 160, an event is a definite position of an activity. Option A is correct, option B is incorrect. Event जो है वो किसी भी activity की एक definite position है, so A is the correct option. 151, an activity is, option A the beginning or end of a specific job. Option B an element of work entailed in the project. Option C the movement of heavy vehicles from one place to another. Option D the progress of work up to the certain limit. So an activity is an element of work entailed in the project.
So B is the correct option. 162. Perth. Option A provides an approach for keeping planning up to date. Option B provide a way of management to require that planning be done on a uniform and logical basis. Option C permits management foresee quickly the impact of variations for plan. Option D all of the above. So पर्थ के अंदर ये तमाम चीजें कवर की जाती हैं. So D is the correct option. 163. PERT is a project planning and controlling technique. Yes, A is the correct option. 164. PERT is an event-oriented technique. A is right, B is wrong. Yes, A is the correct option. It's an event-oriented technique. 165. CPM is option A, activity-oriented, event-oriented, time-oriented, or resource-oriented. So CPM critical path method जो है उसमें मेन फोकस एक्टिविटी के ऊपर होता है. So A is the correct option. 166. CPM stands for combined process method. B critical path method. Option C common planning method. Option D critical process method. So CPM stands for critical path method. B is the correct option. 167. CPM requires option A single time estimate. Option B double time estimate. Option C triple time estimate. Option D none of these. So CPM requires option A single time estimate. 168. PERT requires option A single time estimate, double time estimate, triple time estimate, none of these. PERT requires triple time estimate. So C is the correct option. 169. PERT analysis is based upon option A optimistic time, option B pessimistic time, option C most likely time, option D all of these. So PERT analysis जो है वो इन तमाम के ऊपर बेस्ड होती है. ऑप्टिमिस्टिक टाइम भी उसमें होता है, पेसिमिस्टिक भी और मोस्ट लाइकली एक्टिविटीज का टाइम भी होता है. सो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट ऑप्शन. 170. प्रोबेबिलिस्टिक time for completion of any activity can be found out from option A optimistic time, pessimistic time, most likely time, all of these. So D is the correct option, all of these. 171. The optimistic time represents the option A shortest possible time in which an activity can be completed if everything goes exceptionally well. Optimistic time जो है वो सबसे कम shortest time है अगर बाकी तमाम चीजें एज पर स्केड्यूल चल रही हैं. सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन. बी वाज time in which the activity is normally expected to complete under normal contingencies and time in which an activity will take to complete in case of difficulty. And option D none of this. Yes, optimistic time जो है वो shortest possible time है जिसमें activity complete होती है अगर तमाम बाकी चीजें as per schedule हैं. 172. The time in which an activity will take to complete in case of difficulty is called optimistic time, most likely time, option C pessimistic time, and D none of these. So the time in which activity will take to complete in case of difficulty, कोई challenge आ गया, कोई difficulty आ गई साइड के ऊपर, कोई obstacle आ गए, so उसमें optimistic time देखा जाता है. C is the correct option. 173. The most likely time is the time in which the activity is normally expected to complete under normal contingencies. So A is correct, B is disagree. Yes, A is the correct option. Most likely time जो है वो normal वो टाइम होता है जिसमें एक्टिविटी is normally expected to complete under normal conditions. 174. The amount of time by which the activity completion can be delayed without interfering with the start of succeeding activity is known as option A earliest completion time, B total float time, C free float, option D none of these. So that time is called free float. C is the correct option. 175. The early finish time of an activity is dash of early start time and duration of the activity. Option A sum, option B difference, option C product, option D ratio. The early finish time of an activity is the early start time and duration of activity is the sum of. So A is the correct option. Early जो time है वो early start of the activity plus उसकी जो duration है उन दोनों के sum से हासिल होता है. So friends ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको प्रेजेंट किया. आई होप आपने इनसे काफी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की होगी. ये आपको हेल्प करेंगे आपके जॉब इंटरव्यूज के लिए या एग्जाम के लिए. तो इन वीडियोस को मुकम्मल देखिए, इनको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और CivTech सिंप्लीफाइड फैमिली का हिस्सा बने. चैनल को सब्सक्राइब करें. मिलते हैं अगली वीडियो में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें. थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे.